आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को किस तरह देखा जाता है। जब आर्ट की बात आती है ना तो आप लड़ने मारने पे उतर आते हैं। You don't just say कि the art piece was not so great, ठीक है। आप कहते हो डंडा किधर है, आप कहते हो इकट्ठे हो, आप कहते हो आओ चलें। तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि सिर्फ आर्ट में मॉब मेंटालिटी क्यों? आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपको पता नहीं आर्टिस्ट का मकसद क्या है, आपने आर्ट पीस देख भी लिया, आपको पता नहीं उसको समझना कैसे है। We are in conversation with Saad Sheikh, who is a storyteller, dancer and a filmmaker. और इस conversation का पहला part देखने के लिए all you have to do is click the link here. Because अब artistic integrities गिर चुकी हैं और capitalist integrities बढ़ चुकी हैं, and that's a human fact. Yeah. Humans have evolved into capitalists. But then should we like see कि integrity गिर गई or not, just evolve हो गई, right? Evolve हो गई. Yeah. I don't think this entire aspect of commercialism and art वो blatantly black and white हो चुका है कि अब बिल्कुल ही वो है। बिकॉज इवन हमारे काम में कोशिश तो यही होती है कि यार यू डोंट गिव अप ऑन योर प्रिंसिपल्स, यू डोंट गिव अप ऑन स्टफ दैट यू बिलीव इन। यू Honestly, you shouldn't. नहीं, वो पर्सन टू पर्सन फर्क होता है ऑफ कोर्स। मतलब यू कैन सेल योर सोल इफ यू वांट टू, प्लीज डोंट। Look, Multiform makes really nice beds, but they're expensive. Yeah. You have to buy them, and to buy them, you have to Sell your soul. Sell your soul sometimes. For example, Me Too movement. Yeah. Right? Let's talk about the Me Too movement. If I'm supposed to work with, and I have had offers to work with one or two people who may have been, I don't know what's the word for it, guilty until Accused at least. accused until accused, just accused. I had to make a strong decision that, I don't know what the reality is, but I will stand by my, that this is a victim and she's crying out loud, and I'm going to support her. So I had to make that distance from that artist. Even that happened even in my university. Some people who are very big entertainers as of now, they were hit with the accusation, and we knew. Yeah. So we had to. ये इसी तरह की चीज़ों की बात कर रही हूँ कि इसमें तो इंटेग्रिटी को छोड़ना मतलब आप एक अच्छा बुरा आदमी वाली बात आ गई ना। इसमें आर्टिस्ट की बात तो पीछे रह गई, इसमें एक इंसान की बात आ गई कि आप एक इंसान अच्छे हैं या आप बेगैरत हैं। अगर आप बेगैरत हैं तो आप साथ दें, नहीं है तो फिर आप अपना काम करें। आर्ट इज टू लिव, राइट? एंड इफ इट्स अ वे ऑफ लाइफ देन comes a lot of decision making that happens on every daily basis. तो आपको वो साथ करना है। एग्जैक्टली, स्पेशली अगर आपका इन्फ्लुएंस है, आप इवेंचुअली यू ग्रो टू हैव लाइक अ सर्कल, आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, सो यस यू डू एंड अप influencing them, influencing the situations as well. So it's important. Even at the Colony, we have a manifesto that me and my co-founder Salman Jahangir, so we made a manifesto कि हमने ये करना है, ये नहीं करना, और ये इस के साथ कर सकेंगे, इस के साथ नहीं कर सकेंगे। And I think it's been 2 years, inshallah in July 2 साल हो जाएंगे हमें, लेकिन हम लोग वो manifesto पे अभी तक तो पूरा उतरे हैं। That's amazing. We haven't compromised on the fact that even we started a gallery, Dominion. So Dominion का manifesto है that we will say yes to everyone. It's not के that lobby of artists, क्योंकि अब as soon as you get into the world of arts, you figure out कि हर fraternity में एक अलग politics चल रही है, right? So we said we don't want to be part of any politics. We just want to say yes to anything that we like. If we don't like your work, we'll be very blatantly honest about it. But if we do like your work, then there will be a chance that it will be shown here without any ifs or buts or without any wo ki aap is lobby ke hissa ho ya nahi. So that manifesto you have to create for your life as well. That you have to do this, you don't have to do this. As simple as that, yeah. One thing that I really learned over this 1.5-2 साल का जो पीरियड है कॉलोनी का, वो था कि उससे पहले हम लोग कहते थे एक्सेप्टेंस खत्म हो गई है, इस मुल्क में एक्सेप्टेंस खत्म हो गई है, but I still see, like I said earlier, that I don't want to be in conversation with everyone, right? So why I want to be in conversation with a few people, right, is because there's acceptance. And very recently we did a show, and one of our performers wanted to dance in a bra. And it was a male guy wanting to dress in a red bra, very sensationalizing, but very provocative to the core for the thought process. There was nothing sexy about it. There was nothing demeaning about it. It was just about the human emotion that your skins can peel off, and etc. etc. Now, what we wanted to do with that, हम थोड़ा डर गए। हमने कहा आप कैसे perceive कर रहे हो, आपने तो टिकट बेच रहे हो, आपको नहीं पता कौन आके देख रहा है।
हमने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि nobody should make a video for this performance, और ऐसी और भी performances हुई हैं, so we just request that nobody make a video of this performance. एंड मजाल है कि वो 400 बंदे में से किसी ने भी 1 मिनट के लिए भी कैमरा निकाला हो, क्योंकि ये नहीं होता. आप जितना लोगों को मना करोगे वो उतना वो काम करते हैं. एंड फॉर लाइक गुड 12 मिनट्स का पीस था आई थिंक, अगर एक, तो वो बस देख रहे थे. They were just staring and there were tears falling down their eyes and we were like, how is this possible? Like I was actually surprised. And that was a new chapter unlocked ke Pakistan has acceptance. Yeah, I think a lot of people, we just assume there's no acceptance. So a lot of people who are on the fence, about the kind of mentality they have. Are they more liberal or conservative? Again, not putting them in boxes. Even when they are put in an environment जहाँ पे बेशक they would call it out, लेकिन वो देख रहे हैं हर कोई accept कर रहा है. They also enjoy that human moment. And I think maybe out of those 400, maybe let's say even 5 people were a bit extremist and जो उस पर call out करते, but they were also taken aback that this is not sensationalizing anything. This is not something to piss someone off. This is just a human moment, a human emotion, and that, it's a beautiful moment as well. And they just felt it, right? Because obviously someone goes to a dance performance and all of that, yaar ye to pata nahi kya karenge, but when it hits you, and that's a compliment for you guys and people who are making that community feel and having these things, because even a performance can move you and have Absolutely. a great impact. And I think it took us a while actually to convince people कि हम लोग सिर्फ sensationalize नहीं करते लोगों को. हमारा काम है to tell a story with our bodies. So we're telling about a mother and a daughter. We're telling about a mother and a son through our dance. We're talking about a dying father and a son. We're talking about lovers falling out of love. We're telling about everything, right? And that's a storytelling that you're paying for. That's a storytelling you're coming in here for. Not skin, not sensationalization. Not a scandal or not anything. Yeah, not a scandal. We're not here to make scandals. तो वो चीज मैंने सीखी कि there is an audience that is understanding now that this is storytelling. तो वो जो conversation है वो अभी भी है masses में कि हीरा मंडी की ये होता है वो होता है. तो वो मैं कह रहा हूँ समझने दो, क्योंकि अगर पाकिस्तान को कितने साल 77 years हो गए हैं, है ना, अब तक नहीं सीखे तो मैं क्यों सिखाऊं इनको? मेरे बाप के, मैं बाप का नौकर हूं उनके, मैं क्यों सिखाऊं? It's not my job. I'm gonna do what I'm good at. Tell a story. Yeah. And I also feel कि जब आप ऐसा स्पेस क्रिएट कर देते हो जहाँ पे लोगों के पास इस तरह के विजुअल्स भी आ रहे हैं, तो तब भी एक एक्सेप्टेंस खुद ही विजुअल एक्सेप्टेंस क्रिएट हो जाती है. फॉर इंस्टेंस इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि लाहौर में मॉल्स वगैरह बनना शुरू हुए एंड पीपल स्टार्टेड गोइंग आउट. वही आवाम जो पहले आपको लगता था कि बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी कर रही है, नाउ देयर सॉर्ट ऑफ बिकमिंग ओके विद वुमेन्स प्रेजेंस अराउंड, बिकॉज उनके लिए भी ईजी है. एग्जैक्टली. तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ एक एक्सेप्टेंस साइकोलॉजिकल आती जाती है. सो आई फील योर वर्क ऑल्सो डज दैट. बट जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फॉर पीपल टू रिमेंबर कि we're not always going to be liked by everybody. See, so it's okay if you're a little different and you want different things in life. There are people doing all sorts of things and leading all sorts of lives. So if you feel like an outcast, if you feel कि आप you don't belong, it's generally, it takes a while. हम लोगों को भी बड़े होके समझ आता है कि हमारा ग्रुप क्या है, हमारे लोग क्या, हमने हर किसी से बात नहीं करनी है. Absolutely. It's just like if you want to buy a juice, I would buy apple juice of a certain brand that I like. I will not buy all the juices. I would be loyal to 1 or 2 brands. ठीक है, अगर वो तीसरा कोई गंदा नया चीचा वतनी से एक ब्रांड उठाए तो मैं कहूँगा कि अगर मैंने ट्राई किया मुझे अच्छा लगा, मैं कहूँगा I would stick to the चीचा वतनी brand. But if I don't have to try out anything. मैं हो सकता है लॉयल रहूँ अपने ब्रांड के साथ भी. So people will pick and choose every medium of a small industry. If people want to watch my art, they will watch it. नहीं देखना ना देखें. But my problem is देखने के बावजूद या ना देखने के बावजूद जो तनकीद होती है बिला वजह की, I think that is a problem that art world always faces without a doubt. थोड़ा सा elaborate करें, तनकीद किस मतलब किस I think इनकी analogy से चलते हुए, so I mean he might not drink the चीचा वतनी का juice and he is in his own right not to do it, but he lets it be, right? He is मतलब के so see he might not like, हम एक दूसरे से हर बात से हम तीनों भी agree ना करते हो, but we respect that you have a difference of opinion and we safeguard your right. beverage industry है, right? अब मैं अगर beverage industry को तनकीद करूँगा तो वो industry पे पूरा मुल्क हावी होके उनको backlash नहीं करेगा, right? I will just say the juice was not great. My mom will like, yeah, not that great. जब art की बात आती है ना,
तो आप लड़ने मारने पे उतर आते हो. You don't just say कि the art piece was not so great. ठीक है, आप कहते हो डंडा किधर है, आप कहते हो इकट्ठे हो, आप कहते हो आओ चलें. मॉब तो मेंटालिटी है. वहां पे मैं कहता हूँ कि सिर्फ आर्ट में मॉब मेंटालिटी क्यों है. और मैं अल्लाह माफ करे ये नहीं कह रहा कि मॉब मेंटालिटी हर इंडस्ट्री में होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ इसको एलिमिनेट होना चाहिए, right? Because in the recent times I've only noticed the mob mentality comes out from freedom of speech. ठीक है, not on a product, but why does a mob mentality exist for the art world, for every medium of art, for the performing arts, for the cinema, I for think everything? also anything that is controversial in Pakistan, anything जो mass majority नहीं कर रही है उसके against criticism भी बहुत ज़्यादा, उसकी समझ भी नहीं है बिल्कुल लोगों को. exactly. तो यही मसला है आर्ट के साथ भी. आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, आपको पता नहीं आर्टिस्ट का मकसद क्या, आपने आर्ट पीस देख भी लिया, आपको पता नहीं उसको समझना कैसे है. And then you only highlight the skins and all of that. I think जो चीज़ समझ नहीं आती हम परेशान हो जाते. Twitter जो अब आ गई है, I think that's like everybody should get off Twitter because वो एक anxiety machine है. Yeah. Everybody is just posting shit about art all the time. 10 second, 15 second, 8 second. You don't even know. If a guy picks up a girl, lands her, cut. 15 second का उस वीडियो पे रिव्यू आ गया. You don't know that story maybe of a father, of a mother and a son, who the mother may have cancer. He picked her up, put her on the wheelchair, and stories like this have happened, and that's why I'm quoting that cherry picking is one of the most awful things that you could do to art. पहले तो ये होता था ना कि आप enthusiasts would come to see those art pieces, ठीक है, क्योंकि उनको शौक है. अब तो ये है ना कि anybody can comment because चलो अपनी timeline से गुजर रहे हैं 2 सेकंड के लिए उनको नजर आ गया, so anybody can And comment. we like being, so I think that the problem is जब हम नहीं समझेंगे सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स के पीछे बेशक आपने एक प्रिंसेस की फ़ोटो लगाई है और डैडीज प्रिंसेस आपने नाम रखा पे पीछे एक इंसान है. So the stuff you say, and even sometimes माटी को भी जो बैकलैश मिलता है, and we see it, it's so horrible कि आप ये भूल जाते हो कि उसके पीछे भी एक इंसान है who has feelings, who has fears, all of that. Even you guys, you're doing brilliant work and you're maneuvering, working with everything you get. Still you guys like said कि एक वक्त पे आप भी डर जाते हो, and हाँ, हमें तो because you are part of. बताया जाता है कि ये फॉरेन फंडेड ये हैं वो. मैं कहता हूँ मुझे वो चाहिए फॉरेन फंडिंग. किधर है वो funding? Let's all I distribute the need that foreign funding, right? So you get to hear a lot of that stuff which may not be true. People don't really realize, they don't empathize, they don't think there's a living man who breathes and hurts and cries and loves on the other side. Yeah, but वही ना एक constant circle है जिसमें पसमानदा सोच के लोग बैठे हुए हैं और उनको बस मसला है कोई भी ऐसी चीज जो उनकी व्यूज ओपिनियंस को कॉन्ट्रडिक्ट करे. ठीक है, वो टॉलरेंस, पूरी बात घूम फिर के टॉलरेंस पे आ जाती है कि वी डोंट हैव दैट. पीपल वांट, वही बाबे बैठे हुए हैं आप किसी भी स्टूडियो चले जाएं, आप किसी भी चैनल चले जाएं, आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाएं, वही पुराने बाबे बैठे हुए हैं. इसनो एंज नहीं एंज कर, नहीं तू कौन होता है एंज करने वाला. मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि तरीके बदले हैं, दुनिया बदले हैं, साल बदले हैं, लोग क्यों नहीं बदले. उन बाबों को 80 साल में रिटायरमेंट क्यों नहीं मिले. Principals go of different institutes, art institutes. Why are they 78, 80-year-old and they're still in the damn office? Because you don't know better is their thing. वही जो हम बात कर रहे हैं कि तुम्हें क्या पता है. तुम तो बच्चे हो, कल का बच्चा है. आई थिंक एक जनरल वो भी ज़रूरत है कि यार एक तो ट्रस्ट द न्यू जनरेशन जनरली. आपके मुल्क की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज द यूथ, 64% population जो कि बड़े केपेबल हैं, सोच समझने वाले लोग हैं. यू नो दीज आर पीपल हु आर विलिंग टू हैव कॉन्वर्सेशंस. किसको शौक है बस मसलों से घिरे रहने का. सो आई थिंक दे ऑल्सो नीड, द ओल्डर जनरेशन ऑल्सो हैज़ टू सॉर्ट ऑफ कैच अप टू अस कि अच्छा यार ये चीज़ें हैं. बट आई ऑल्सो फील, पता है क्या, कभी ये होता है कि a lot of us like younger generation या generally जब छोटे होते हैं we also tend to give our power away. Does your art make you feel a sense of responsibility? कितनी responsibility से वो content बनाया जाता है. content भी डांस की फॉर्म में हो, थिएटर की फॉर्म में हो, किसी भी चीज़ की फॉर्म में हो, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है. डू यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट यू पुटिंग आउट देयर. डू यू फील रिस्पॉन्सिबल कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा. जब लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो तब कैसा फील होता है. या देखिए ये this is actually tricky, you know, because I sometimes I want to do stuff for myself, right? Sometimes I do it for the audience. When I do it for the audience, of course there is a certain, मैं अब न्यूयॉर्क में तो पैदा हुआ नहीं था, तो मुझे पता है कि अगर मैं लाहौर में एक चीज करूंगा तो मुझे कल्चर को देख के करना, कॉन्टेक्सचुअलाइज करना पड़ेगा आर्ट को भी. ऑफ कोर्स, जी जी, ठीक है. तो I know that there is more freedom in art, that all sort of absurdity, all sort of freedom of speech comes in if I'm in a free world. I still think I'm a free man, but there's a lot of, I don't want to offend anyone.
And I think that's where that empathy comes in, that I actually don't want to piss someone off. I actually don't want to go against someone's religious or cultural or racial feelings. So I would produce art that makes people happy. So that's my responsibility, not to hurt people. But I also, as an art maker, would like the responsibility should reciprocate, and their responsibility is not to get hurt by everything that's being done. So just because it's my version of the story, you have to listen to it. So अगर आपको लग रहा है कि ये गलत चीज है, पर ये मेरा वर्जन है, so how can you look down on my version? और फिर कभी कभार ये एक कॉमन कॉन्वर्सेशन है जो कि मुझे नहीं पता, अभी तक मैं इवॉल्व नहीं हुआ उतना कि मुझे लगे ये सही है गलत है, क्यों हर चीज एक आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ओके कि यू आर देयर टू एंटरटेन, ये वो वाली आर्गुमेंट है. मतलब वीना मलिक, ठीक है, वीना मलिक बिग बॉस गई इंडिया, वो पाकिस्तान का एम्बेसडर तो नहीं थी वहां पे, तो लोगों ने क्यों कहा कि ये पाकिस्तान का नाम खराब कर रही है? शी वेंट देयर एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट. सो वो उसके बेचारे की कमजोर कंधों पे हमने पाकिस्तान को क्यों रख दिया? ये तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ये वही वाली तरीके हैं कि जी एक फॉर इंस्टेंस औरत मार्च के साथ अक्सर ये होता है ना कि ओ इस एक बंदी ने ये पोस्टर उठा लिया है तो ये क्या है. हाँ, Saad said something very beautiful. He said the responsibility is not like, I think that's, it's not only his. Yes, to a certain point it is, but it's also on the viewer. It's on the viewer as well. At least व्यूअर अगर आपका इवॉल्व नहीं हुआ टू अंडरस्टैंड, तो आई थिंक I'm not in conversation with him. Yeah, Okay. exactly. So Then he's at 1.5 million viewers that I don't want. exactly. So ठीक you है, साथ can't, का ये तरीका you है. can't हाँ, put fit everything है. on the content. Yes, थोड़ा सा एक आ जाता है कि insensitive नहीं होना, एक थोड़ा what image you're portraying, जो पाकिस्तानी ड्रामे बिल्कुल नहीं करते, by the way, just the big money which we call, वो नहीं करते. लेकिन the viewer, they also need to see the perspective, empathy होनी चाहिए and see where they are coming from. Yeah. And It yes, should be reciprocation. exactly. Right? And अगर नहीं भी agree करते, तो respect their right to exist. और हम लोग हमेशा अवेलेबल है शो के बाद, और ये होता है शो के बाद लोग आके हमसे बात करते हैं कि आपने जो वो किया था वो बहुत अच्छा था, पर उससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी, तुम कहते हैं, और मैं बकायदा तौर पे अगली दफा उस चीज को सोचता हूँ कि यार किसी को इससे प्रॉब्लम हुई थी तो अगली दफा मैं ये नहीं करूंगा, मैं इससे बेहतर करने की या कुछ कोशिश करूंगा. सो वी टेक दैट इनटू अकाउंट एज आर्टिस्ट एज वेल. बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट व्हाई शुड इट बी आवर रिस्पांसिबिलिटी टू सेव द वर्ल्ड, right? Because a lot of people think that it's Malala's responsibility to do this. Yeah. Who gave her that responsibility? She's a 21-year-old. Cut her some slack. I would add to that, it's not only her responsibility. It's not only her responsibility. So see, जो Everybody स्क्रीन comes के in. सामने या लाइमलाइट में यार इनकी जिम्मेदारी, आप जो अपने पर्सनल लाइफ में कर रहे हो, बेशक यू आर इम्पैक्टिंग वन पर्सन, हम अपने आप को रिलीव कर देते हैं, जी मेरी तो जिम्मेदारी नहीं, मैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, बट यू आर एन इक्वल पार्ट ऑफ सोसाइटी. Yes, to a certain extent, let's say the colony में जो काम हो रहे हैं और साथ की थोड़ी ज़्यादा है because he's in the limelight, but that does not resolve you of your responsibility, even as a viewer, as a fellow pedestrian or whatever, जो भी role आप उस वक्त कर रहे हो, as a fellow colleague, as a friend, whatever it is, right? देखिए एक इकोसिस्टम है और हर बंदे को अपना पार्ट प्ले करना है. How मुझे big or अपनी how responsibility, yeah, no matter how big, no matter how small, it's like an anthill, right? Every chunti brings something to the table. So as a viewer, they have to bring us something. Just because we're on stage doesn't mean that we're at dominance here. Doesn't mean that we have the say here. You have a say as well. Sometimes to be quiet and watch the show. Sometimes to come to us after the show. You know? So everybody has a part to play. And I think artists shouldn't be the only ones जिनसे expect किया जाए. Of course. Yeah. Even like companies को जैसे advertisements में कहते हैं कि ये हो गया वो, I understand again responsibility का थोड़ा सा level ज़्यादा है, but again it's on the viewer's point as well because उनकी argument है viewer ये चाहता है और कुछ cases में चाहता है. अब Viewer जैसे के मेरा लड़े एक अभी नहीं हमारा चाहिए. ad ban हुआ जिसमें डांस था गाला बिस्किट का. अब I didn't see उसमें तो full sleeves भी पहने हुए हैं उस actress ने, right? And you know That was just stupid. I didn't understand क्या प्रॉब्लम थी. लोग तो देखना चाहते हैं औरत who I seen the frame on national television breathing and alive breathing and and she's alive dancing as well. woman. Yeah. तो मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आती कि बिस्किट्स और बैंक्स और मोबाइल नेटवर्क्स सिम्स सबके एड्स में डांस है. ठीक और है. ये तो कल्चर, ये तो हमारे खित्ते का डांस है, it was a very cultural thing. ये तो हाँ, वेस्टर्न उसमें एजेंडा भी नहीं कह मैंने सकते. उसमें खैबर का डांस, पंजाबी लुंगी, Exactly. हत्तन, हाँ, I and like all of that. Everything was in But Pakistanis don't dance. Pakistanis don't हाँ. dance. Sir, Pakistani women don't go on their periods, don't you know? Yeah, वो pads भी ban किए ना यहाँ पे तो. So this country is crazy.
that movie Padman got banned in this country because they said it's against our culture. So basically, women don't Your go. biology is against my culture. Yeah, Wow. yeah. Thank you so much for being Thank here. you. It was Thank you for lovely. having me. You're It was welcome. Audience को भी पसंद आएगी मुझे लगता है. Thank नहीं you so आई much. तो again as he said. You're not my audience. Saad Sheikh can say that at the moment. We can't say that. Yeah. Yeah, but thank you so much. It was amazing. Thank you so much. Thank you guys. भाई हर चीज़ के बारे में क्यों बोल रहा है? किसी चीज़ के बारे में थोड़ी देर वेट कर लो कि तुम्हें कोई एक्चुअल इमोशनल आ भी रही है, उसके साथ कनेक्टिविटी, कोई इन्फॉर्मेशन भी तुम्हारी है, कोई रिसर्च है. मतलब इट्स नॉट लाइक योर लाइफ इज़ नॉट लाइक फेसबुक के बस जल्दी जल्दी बस एक बटन दबाना है, बस एक हार्ट का इमोजी दे देना है या दूसरा इमोजी दे देना है. सो जब हम चीज़ों के बारे में ओपिनियन देने से पहले ये सोचेंगे ना कि हमारी जो एक्चुअल ओपिनियन है वो आई कहाँ से है. यानी ये वही ओपिनियन तो नहीं है कि जैसे औरतों के हकूक़ की बात हुई तो मर्द के हकूक़, ये क्रॉस में फेंकने वाला आर्गुमेंट होता है. यार इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दो, ये रेलेवेंट नहीं है इस टाइम.